everyone should hire you. My name is Larib Khan, and I will be host for the today's event. I'm a first year BHM student and a team member of Event or Logistic team in ESEL, which is an initiative under Center for Innovation and Entrepreneurship. ESEL Jamia Millia Islamia is an organization that strives to impart knowledge about entrepreneurship and startup. For today's event, we have Syed Abdul Khalid sir as our chief guest. So, can you open your camera? Am I visible? I have actually. I could see my... Yeah. Okay, all right. So I would like to give an introduction about you, sir. Sure. Before I do that, let's create some ground rules. People who are not speaking, please put yourself on mute. This is going to be an interactive session. So it should not be that I am only talking and you are listening. All right. So the best part about communication is that it should be two-way. It should not be just one way. So this session ko hum interactive rakhenge. So I'll be expecting responses from you to the questions I ask. And people who are not speaking, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, please ensure कीजिए आपका mic muted है. And third, obviously, there will be a Q&A round after the presentation is over. So आपके जो भी questions हैं related to the overall session, you can hold it, you can note it down somewhere, and we can take those questions at the end of the session. Okay, sir. Thank you. Okay. So let's get done with my introduction. My name is Syed Khalid. I am an MBA grad from Jamia Millia Islamia. I also have a master's degree in IT. Currently, I am associated with HCL Technologies as a consultant, where my role is to deliver technical projects end-to-end for a banking client. I have more than 12 years of experience, almost 13 now, which ranges from service delivery to technical services to project management and whatnot. I was asked if I could deliver this session, and I was more than happy if I will be of any help to the upcoming people who will be joining the corporate world sometime soon. So it's a pleasure here. If we have the right participants, I think we are good to kick off the meeting. Yeah, of course, sir. All right. Lara, would you please go ahead and start record? Or shall I do that? Someone else is going to record. I have the host control, sir. Sorry? Someone else for my host can only record the session, sir. We don't have the control. Yes. Okay. Arish bhai, I think you'll have to record the session. Is it going to be live? Okay. Yes. That is a better option, Lara. I think you take the host. Wait a minute. What should I do? Should I record? Yes, just click on record. Perfect. So I'm sharing my screen now. Let me know once it's visible to you. Yes, visible, sir. All right. So today's topic is importance of soft skills and why should one hire you. So when we talk about communication skills or soft skills, generally people believe that it is more about the written and verbal communication. जब हम communication skills की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर मेरी इंग्लिश फर्राटेदार है या मेरी जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ वो फर्राटेदार है और मैं अच्छा लिख सकता हूँ तो मेरी communication skills बहुत अच्छी हैं. That's a myth. I'm not sure if everyone has the same opinion, but for me, soft skills or communication skills is comprised of a lot many things and not just written and verbal communication. So अगर आपको अपनी soft skills बेहतर करनी है तो you'll have to work on your body language, you'll have to work on your timing, you have to be a better listener. You just cannot speak all the time, you have to listen to others. So जब दूसरे बोले, it is important आप उनको importance दें, उनके वक्त को, उनकी बात को. If you understand them correctly, it is possible that you will be responding in the correct way.
But अगर आप active listener नहीं हैं, there's a possibility that whatever the person in front of you was trying to convey, आपको समझ नहीं आएगा, and your response will be flayed. Because of that, there will be misunderstandings or miscommunications, as we call them. So it is not just written or verbal communication that you have to take care of. आपकी soft skills बहुत सारी चीजों से मिलके बनती हैं. We will talk about that during this session. But if anyone wants to shed some light about their views on why are soft skills important and why should one hire you? Anyone? Lara? Yes, sir. I mean, it's an open question सबके लिए है कि क्यों जरूरी है आज की डेट में आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होना, क्यों इम्पोर्टेंट है. किसी के पास कोई अपने व्यूज हैं, नहीं हैं, let me know and then maybe we can start the session and I can show you what I have prepared. So बहुत सी ऐसी फील्ड है मेरे हिसाब से जो एक ऐसा रिक्वायरमेंट भी मांगती है कम्युनिकेशन स्किल. Right. In fact, in today's world, there is no organization which is not asking for good communication or something else. सर आई थिंक मुझे लगता है अगर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन है तो उससे जो हम अपना मैसेज है वो बहुत इफेक्टिवली डिलीवर कर पाते हैं. दैट इज वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन आज के टाइम में ज्यादा जरूरी है. Yeah, fair point. And like I said, कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप बात नहीं कर रहे होते हैं, सामने वाला भी बात कर रहा होता है. So it is important that you two are both good speakers and good listeners. And जब आपका मैसेज सही डिलीवर होगा तो उसका रिस्पॉन्स बेहतर आएगा. और अगर आपका मैसेज सही डिलीवर नहीं होगा, there will be miscommunications and there are chances कि वो communication आपकी पूरी तरीके से haywire हो जाए. All right, let's move on to the next slide. Let me put it in the presentation mode. Is it visible to everyone? No, sir. Not? Okay. One minute. I think I am not able to share my screen. Arishbhai, you need to make me host. Or you need to give me the You are right. host now, sir. Yes, now I am able to. Thank you. Is it visible now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So the agenda for today will be not just communication skills, but presentation skills. What kind of vocational courses or industry standard courses that are available in the market today, which can help you become a better job ready. Then we will be talking about why should one hire you. A very important question. In almost people who are here who are working, maybe they would be aware that in every interview that you go to, the most imminent question that they have is, why should we hire you? And although it sounds like a very simple question, this question can decide the fate during an interview. So very important to know why should one hire you. You should be very confident about your own positives, and then you can explain it to the recruiter. Now, next thing will be what kind of tools are available in the market, which you need to learn, right, so that you become job ready. So the introduction, like we have already discussed, communication skills, presentation skills, the vocational courses, the tools, these are the things which will together make you a person who's standing out of the crowd. Because आज के डेट में सिर्फ एक डिग्री होना आपके पास is not enough. At the same point of time, सिर्फ communication skills होना is not enough. And अगर आपके पास कोई niche skill है और आपके पास communication और शायद एक डिग्री नहीं है, even that is not going to help you in the long run. So this session is going to be about giving you information on what all makes you a better job seeker and what makes you stand out of the crowd, because there are like millions of applicants in the world right now for different jobs,
and you would be part of that. But what is it that is different from others that you're carrying and that will help you get a job? I think people need to go on mute. Please everyone mute yourself if you're not speaking. All right. I think everyone needs to go on mute, please. All right. So I tried to create a chart here. It's only for example purposes. This is not related to any study that has been done. Okay. So this is just related to how better I can explain it to you. So for example, if you look at this presentation chart, guys, please go on mute. So if you look into this presentation chart, what I have done is, if you look at the bullets, so I have bifurcated into 4 things: degree, communication skills, vocational knowledge or certifications that you are doing, and your presentation skills. So what are the chances of you being job ready or you being able to get a job in the market in terms of what kind of knowledge do you have around these 4 things, right? So having a good degree, perfect. But along with it, having the right communication skills, very important. Certifications, if you have one, if you do not have one, but you know, it is okay. But if you have the certification, it makes you stand out of the crowd. And how good are you with your presentation skills? So I have just tried to explain, if you can gauge yourself and you think you are rating yourself 10 on 10 on all these 4 parameters, then you have very high probability of getting a job in comparison to anyone else. But if you maybe gauge yourself somewhere around 8 in those 4 parameters, the chances drop to high, but you're still doing a good job and you'll still be able to make it. So अगर आपके पास ये 4 skills हैं और आप अपने आप को 10 out of 10 rate कर पाते हो, because आपके पास एक अच्छी degree है, आप communicate अच्छा करते हैं, आपकी presentation skills बेहतर हैं, और आपने during your education you tried to learn about new technologies or you tried to create a niche in one of the trades, so that will help you stand out. और वो आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी तैयार करेगा, प्लस आपके प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है. The moment you drop it down to say 8, you go to a high probability of getting a job. The moment you drop it down to 6, you have a moderate chance of getting a job. When I say moderate, because like I told you, unemployment is something that we are dealing with badly right now, and there are more applicants to a job than the number they have, right? So that is where it is important that you excel in all these things, जहां आप बेहतर कर सकें आपको भीड़ से अलग खड़ा करने के लिए, ताकि जहां अगर 1000 applicants हैं, आप उनमें शायद उभर के सामने आ सके. Now next is, if you have marked yourself low on all 4 parameters, maybe your degree is something that is not desirable in the market, maybe the communication skills that you have is not good, the presentation skills on top of it is not good, and you did not create a niche, you did not learn any new technology, then my friend, you will have to struggle even after your degree, because like I told you earlier, आज की डेट में सिर्फ डिग्री होना is not enough, is not a gateway to a job. It is a gateway for a job for the premier institutes maybe, right? And it happens even in Jamia that the placement cell is able to give recruitment to some of them, but not everyone. So it is important that we understand what else needs to be done to be job ready. So how many people agree, कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज की डेट में सिर्फ डिग्री होना is not enough? Yes, sir. I agree. Me. I do. I do agree, sir. Agree. Okay, perfect. So I think were you able to understand this chart? या मैं दोबारा से explain कर दूं?
what Yes, I'm sir. trying to show? Understood. Clear है sir. Understand. Okay, thank you. So now talking about communication skills, soft skills. अगर आपके पास बेहतर communication skills हैं, तो एक तो आप अपनी बात बहुत effectively communicate कर पाते हो. दूसरा, you create a good impression around. So people know you can be the go-to guy if they are in a problem. ये मैं personal experience से ही बोल सकता हूँ. In corporate world, अगर if you have the right soft skills, if you have the right communication skills, there is no barrier to promotions, there is no barrier to growth in the industry. But yes, not just communication skills. Yes, like I told you, ये एक पूरा पैकेट है, एक पैकेज है पूरा, जहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी. ऑब्वियसली योर नॉलेज ऑन द स्टफ दैट यू आर वर्किंग, एंड उस पे आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री टूल्स आर यू गुड एट. सो ये सारी चीजें, इट्स ऑल अ कंप्लीट पैकेज. बट cherry on the top is the communication skills, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज की दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, communication skills plays the bigger part. So it not only shows that you're a go-getter. Go-getter is one जिस बंदे को ये पता है कि मेरा गोल क्या है and how to achieve it. So these are some slangs or phrases in English जो आज की डेट में बहुत common use में आते हैं. So a go-getter is one who knows what is my target and how to achieve it. So if we talk about the interviewers, the recruiters, when they interview you, they already have your resume at their hands, right? So they know आपने कहाँ से पढ़ाई की है, they know आपके पास कौन सी degree है, right? They might also be aware of what kind of certifications you have done, या किस किस्म की आपने internships की हुई हैं, right? What they do not know is how good are you in communications, because the resume does not tell that, right? So most of the times when a recruiter is interviewing you, and these days even they are trying to interview on video calls because they cannot do it in person. So one of the most important factor that they look at is your body language. I remember when I got selected for this MBA in Jamia, and there was this interview round. There were almost 7 people in that room, and I remember only 2 or 3 were asking questions, and I could really see that the 2 out of the 7 people were only watching my body language. They were only looking at me about how uncomfortable I am getting on the questions, how clear am I in my thoughts. So it is important, right? आपका body language बहुत अच्छा positive होना चाहिए, important है. You're listening to the question from the recruiter or interviewer, because when you listen it correctly, then you'll be able to answer it properly. So you can construct an answer only when you have been an active listener. So moving on to type of communication skills. Generally, people talk about 3 types of communication skills, right? Verbal, non-verbal, and written, and that's it, right? And then people do not tell you that these can further be bifurcated, or there could be more than this. I'm not sure if you guys have been able to read it, but अगर आप जाएं इंटरनेट पे भी, तो आपको शायद 2 या 3 तरीके की चीजें ही मिलेंगी maximum when it comes to communication skills. So what I have tried is I have actually taken it to 7, and we'll break it and we'll see कि वो 7 तरीके की communication skills क्या हैं और क्यों important हैं. So verbal communication. So right now I am talking to you, so it can be classified as both verbal and oral communication. All right, मैं ज़बानी तौर पे बोल रहा हूँ आपसे, आप सुन पा रहे हैं मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इट इज कम्युनिकेशन. आप जवाब दे रहे हैं मेरे सवालों का, सो वी आर कम्युनिकेटिंग. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो बंक मारना है. कम्युनिकेशंस आर दी वंस जिनके पीछे बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है. इफ जिसने वो मैसेज लिखा वो क्लियर नहीं था अपने थॉट्स में, द मैसेज गिवन टू द रिसीवर कैन बी वेरी डिफरेंट. So it is important कि जब आप written communication में deal कर रहे हैं, when you're writing something, you need to be very precise,
to the point, and you ensure that you are not leaving open-ended sentences in that particular communication. So there are two types of questions generally that people ask. There's open-ended, there is closed-ended. Will you go to the picnic? That's a closed-ended question. You can say yes or no. But if I say 3 people are coming to picnic, are you sure you want to go? Now that's an open-ended question, because when I say, are you sure, I am giving you option to express your views on if you want to go to the picnic or if you do not want to go to the picnic, and why do you do not want to go to the picnic. So that's an open-ended question. So जब आप communicate करें, it is important आप बहुत ज़्यादा open-ended questions की जगह ना छोड़ें अपनी written communications या अपनी verbal communications में, because इससे ये होगा कि आपकी communication lengthy होगी, responses lengthy होंगे. But अगर आप closed-ended questions पूछते हैं, communication will be crisp, the message delivered will be crisp, and the response that you will get will be crisp. अभी तक जो भी मैंने बोला है, if anyone has any doubts, कोई question, confusion, please ensure that you speak up. If not, I'll move forward. Oral communication. So oral communication is both formal and informal. So face to face अपने दोस्तों से हम बात करते हैं, generally it's informal, but face to face अपने client से जब हम बात करते हैं, that's an oral communication. And then that is a formal communication. So it's very important कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपके construction of sentences, choice of words, ये सारी चीजें communication के मामले में, especially oral communication, written communication, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी target audience क्या है. So yesterday मैंने आरिश भाई को phone किया, I called him and asked him, sir, what will be the target audience, right? Because if I do not know my target audience, शायद मैं अपना मैसेज बेहतर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. So for example, अगर आप ज्यादातर लोग अभी इस सेशन के अंदर are undergrads, if I'm not wrong, or people who are pursuing their masters maybe, and I could see there are some people who are already employed, and I could see there are professors in this meeting, I could see there are some guest faculty in the meeting, and if मुझे ये पता होता कि ये सिर्फ और सिर्फ employed लोगों के लिए है, there's a possibility the content of this presentation would have been different. Not possibility, but yes. So ये content prepare इसलिए किया गया because जो larger audience मुझे बताई गई, वो larger audience are students, immediate job seekers. So the presentation that you're seeing is from that perspective. Now coming to active listening, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ सबको कि to be a good speaker, you have to be a good listener. You cannot be a good speaker if you are not an active listener. So, for example, if 2 people are talking and both of them are talking, both of them are speaking, and none of them are listening, वैसी communications का क्या होता है? If anyone want to answer. Anyone? जहां पे 2 लोग सिर्फ बोल रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है. What happens to such a communication? No, sorry जो to bring. information होगी वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो गोल था हमारा जो मैसेज पहुंचाने का, it won't be able to deliver because वो सुनी नहीं गई होगी. जब सुनी नहीं गई होगी तो उसके रिटर्न जिस तरीके का आउटपुट आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाएगा. Perfect. So this will not be a communication, because communication requires 2 parties to engage with each other and have a feedback. So there is a particular sequence should be there. Without it, in such a way that you cite this example, it will not be a communication. Okay, yeah, thank you. So to make things a bit relatable and funny, I'm bringing this example. So I do not watch Big Boss, but I do see some of the memes from that particular program. I'm not sure how many people यहाँ पर कितने लोग Big Boss देखते होंगे, but what I have understood from the concept of the program is that
one person should not let another speak, and there should be a lot of miscommunication. So and some of the memes that I have seen, I could totally relate to it, that people do not listen to each other, and that is where the communication can turn into a fight or miscommunication, misunderstandings. So it is very important that when you are speaking, you are also listening to the one in front of you, and the same goes for the other person around. So if they are speaking, they should be ready to listen to the other side of the story, because if both do not make them clear, and it's not clear in both of their heads what the other one is trying to say, आप मिसकम्युनिकेट करेंगे. मिसकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो कम्युनिकेशन कहीं नहीं जाएगी, and that will result into differences. Now moving on to the visual communication. So for example, right now I am presenting my screen, and अगर if I do not speak, okay, मैं कुछ भी ना बोलूं और मैं सिर्फ इन स्लाइड्स को नेक्स्ट 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 करता जाऊं, आप ये स्लाइड्स पढ़ें, आई थिंक ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप अपने आप इस स्लाइड को समझ पाएंगे, राइट? सो दिस इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? टेलीविजन पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, सॉरी समवन नीड्स टू गो ऑन म्यूट. ओके, टेलीविजन पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जो रोड पे चलते हुए आपको बिलबोर्ड्स नजर आते हैं, these are all visual mode of visual communication. So you see a car on a billboard and you see what is the price on road for that car. That creates an impression in your mind, and you go and maybe try to buy that. Just an example. So without saying anything, the visual communication was able to put a car in your head that you can buy. So that's very important. Now coming to mass communication. The process of imparting and exchanging information through mass media to a larger segment of population. For example, news. Any questions in the types of communications that I have just explained? All right. Now, the most important part. Walt Disney once said, in order to reach your goal, you need to stop talking and start doing. All right. So, and everyone knows who Walt Disney is and what impression did he make to the world. So, if you do not know, Disney was his creation, Walt Disney. सबसे important चीज कि communication skills क्या हैं, कितनी तरीके की हैं, perfect, सबको पता है. I think everyone knows that. But क्या सबको ये पता है, are you able to gauge yourself correctly? If you are a master to that, if you are a intermediate learner, if you are a beginner, कितने लोग हैं जो अपने आप को gauge कर पाते हैं, या they have the mode to understand and gauge कि उनका current communication skill का standard क्या है? Please speak up. Yes, sir, I can gauge myself. Okay. And Munir, it was Munir, right? Yes, sir. And Munir, do you think कि अभी भी scope है improvement का? Yes, sir. We can improve ourselves. Okay. So how many people agree to the fact that there is no end to improving? Yes, sir, I agree. Sir, I agree. And this is not just communication skills. I think any field that we go to, right? Be it our jobs, be it our degree, our studies, there is no end to learning, right? And there is no end to improving ourselves. So if someone says I am perfect in something, he is a fool, and he's not fooling anyone else but himself or herself. So ये जरूर ध्यान में रखना हमेशा आप लोग कि आप कभी भी perfect नहीं हो सकते हो, be it in any field.
there will be 1 or 2 tick boxes जो शायद आप check नहीं कर पाएंगे. So it is important that you know what are your key areas of improvement and what are your key strengths, because आपकी strengths आपको आपकी weakness ठीक करने में help करेंगे. But always gauge yourself. हमेशा अपने आप को assess कीजिए, evaluate कीजिए कि जो आप कर रहे हैं, have you even become an intermediate into that? Have you become an expert into that? But never consider yourself to be perfect in anything. So is there any way out to see how to gauge our level of communication skills? Is there any process? Can you tell us? Process to gauge your communication skills, I think you are the best judge. But again, in today's world, it is very easy because you have got a lot of applications, you have got a lot of internet URLs or web pages which are ready to scan your reading, your written, or your spoken English. And I'm just talking about English for now, and we can talk about other things as well. So it is available. अगर आपका circle आपको evaluate नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, but there are chances of improvement, then you have tools. Like I said, ये वो tools हैं जो आपको बेहतर करने में help करेंगे, ठीक है? So even today, I do not think that I am perfect in English, or I have the best knowledge of English. I can speak the best of the English. I can write the best of the English. So वो नहीं है मेरे अंदर अभी भी, and I keep learning. So I learn new words, I learn new slangs, I learn new phrases. But it is not just important to learn things. It is important कि आप उसको अपनी रोजमर्रा की बात में कितना implement कर रहे हैं. Okay, sir. Thanks for the response. No, but you understand, right? So just like I told you. So what you can do, Nabila, right? Yes, sir. So Nabila, Didi, I think a lot of people don't understand this, but it is very important that people should write diaries. And I'm not sure if you will be able to connect to it, but people who are here on in this meeting, a suggestion, if you guys think that you are improving your communication skills, you need to improve your communication skills, or even if you think you're perfect, all right, start writing a diary. And do not think while you're writing the diary, all right? You do not have to be grammatically correct when you're writing the diary. Just put your thoughts together and start penning it down in the diary. So when you do that, you're not thinking about anything else. You're not trying to impress anyone with your words. What happens is that the thoughts that you put on the paper are very pure, right? And once you have written whatever happened during the day, you should do it daily, FYI, at the end of the day. And once you have put down everything that you did on during the day, and you review your diary, you review that journal, I'm sure that you'll be able to identify the glitches. So when you're writing, don't give it much of thought. Just write everything that happened during the day. But once you're done, then look into it, give it a thought, and see what could have been written better. That will help you train your train of thoughts in a very calm fashion, very calm manner. और इससे जो self improvement आपकी हो, कई लोग कहते हैं you should start speaking in front of the mirror. Agreed, आपको करना चाहिए, but then you should also record it, because if you are not recording it, then you will not be able to gauge the incorrect words that you used, the grammatical mistakes you made. So it is important. And देखो, मतलब I am being a devil's advocate, but in today's world, your grammar is not Bible anymore. All right? तो आप इक्का दुक्का grammatical mistakes कर सकते हैं. No one is going to judge you for that आपकी grammar खराब है. All right? Because even the Brits, even Americans are not 100% perfect in grammar. All right? वो उनकी native tongue है, तो वो बोल रहे हैं अच्छा. But वो हर वक्त 100% grammatically correct होते हैं? No, ऐसा नहीं है.
even we Indians might be better speaking better grammatical English in comparison to them. तो shocking लगेगा आपको कि how can we be better, but truth be told शायद कई बारी हम उनसे बेहतर grammatical English बोल पाते हैं in comparison to them, because वो उनकी native language है, right? They did not learn it, they had it. जैसे हमें कोई कहे कि आप हिंदी या उर्दू है आपकी, हम उसमें कुछ गलतियां करते हैं, आए दिन करते हैं, बट कई बार हमको पता भी नहीं होता कि वी आर डूइंग इट बिकॉज इट इज आवर नेटिव लैंग्वेज. तो हम उसकी जो छिटपुट गलतियां हैं कई बारी वो नजरअंदाज कर जाते हैं. सेम गोज विद द पीपल इन द वेस्ट. So at times they might not be grammatically correct, but they are able to pass on the message correctly. Same goes for you. तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कभी भी रिक्रूटर की, आपके क्लाइंट की, कि जी आप तो बिल्कुल ग्रामेटिकली जो सेंटेंस बनाओगे वो A to Z 100% करेक्ट होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेशन इज कि आपकी इक्का दुक्की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो ठीक हैं, लेकिन जो मैसेज आपने कन्वे करना है वो मैसेज आप कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है. I have been speaking mostly in English since this session started. But कितने लोग हैं जिनको मेरे accent से या the way I spoke चीजें नहीं समझ आई हैं? I'll be really appreciating अगर आप honest response देंगे. कितने लोग ऐसे हैं जो शायद शुरू से अभी हर चीज को अच्छे से नहीं समझ पाए? Please mute yourself. Prakash, I think you need to go on mute if you're not speaking. Ramsha. Okay, so once again asking the same question. I think I lost the rights again for sharing. So once again, guys, what do you think? अभी तक जो भी कुछ मैंने बोला है, was it clear? Were you able to understand everything? Yes, sir, it was clear. Yes, sir. Yes, sir. Can you please repeat example of open-ended sentence and closed sentence? Sorry, your voice is not very clear. Sir, I was saying, can you please repeat the example for open-ended sentence and closed-ended sentence? No, not sentence. I was talking about questions. So open-ended questions वो होते हैं, that is like opening a can of worms. वो आपकी problems बढ़ाते हैं. ठीक है. There will be instances जहां पर आपको open-ended question पूछने पड़ेंगे. ठीक है. For example, when you are planning, आप जब कुछ प्लान कर रहे होते हो तो आपके क्वेश्चंस ओपन एंडेड होंगे क्योंकि आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है. बट जनरली व्हेन यू आर इन अ डिस्कशन विद योर क्लाइंट, विद योर टीचर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड. ऑलराइट. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो आपके क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन हो वो क्लोज्ड एंडेड हो, सो दैट मिसकम्युनिकेशन का या एग्जैजरेटेड कम्युनिकेशन का कोई स्कोप आप ना छोड़ें. If you want, I can give you another example, Adiba. Like I said, कि अगर आप पिकनिक पे जाओगे या नहीं, that was a closed-ended question, right? So Adiba can say, yes, I will go. No, I will not. That's a closed-ended question. I did not ask Adiba to explain to me कि आप क्यों नहीं जाओगे. But when I say to Adiba कि there are 3 people going, would you be considering to go? Then I am giving Adiba a chance to explain herself why or why not she would want to go. And then the communication gets lengthy. Understood? Got it. Thank you. Okay, so let's move on to how to improve communication skills. So सबसे important चीज है, अगर आप लोग मुझे actively सुन रहे हैं, आप अपनी communication skills बेहतर कर सकते हैं. I have given you a bit of exercise जो शायद आप आज से start कर सकते हैं. 2 things generally, और क्योंकि क्या होता है कि unfortunate है ये बहुत हमारी society में या हमारे circles में, that if you would try to speak English, you might be made a joke of. All right, and unfortunate है, but people do not understand it till it's very late. कि क्यों important है to start learning the language in early days.
ऑलराइट, वो लैंग्वेज आपको क्या चीज हासिल करा सकती है, उसकी इंपॉर्टेंस का गाइडेंस, काउंसलिंग नहीं हो रही है. सो people who are undergrads and who are in this meeting, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या people around you, please start enlightening people why language is important. Why is it important to be good at language, especially English? Because आज की डेट में वो एक global tongue है. It's not limited to America, or it's not limited to England. It's not limited to India as well, right? आप आज की डेट में even if you go to the Middle East, English is a well accepted language. वो Papa Challenger. So you're not audible. Papa Challenger. I think sir has lost the electricity. एक्सक्यूज मी सर, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, तो वो 100 मैक्सिमम हो गए पार्टिसिपेंट, तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा. Somebody please contact sir. Yeah. I don't have the right. अच्छा, okay, okay. जी 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 sure. Okay, okay. जी. Harish sir, can I speak? All right. So meanwhile, Khalid sir joins in. I think the message that he was passing was that you should try to express yourself, not to impress anyone, right? So express or impress में अगर आपको फर्क पता होगा, so I think that will help you better. Do you guys know what is expressing yourself and impressing someone else means? Maybe a chat would help to understand if you got my question. Express कर रहा हूं मैं, सही express कर रहा हूं और impress कर रहा हूं मैं, तो what does that mean? What is the difference? I didn't get the answer. Express and implied. So basically, let me try to clear it all. Express is you are able to express your answer or question, whatever you are speaking about. Okay, you are very clear about it. And if you are trying to impress, so Khalid sir was talking about a communication where both the people are speaking, whereas nobody is listening to anyone. Okay, so it's like impressing but not expressing yourself, right? तो जब आप सुनते ही नहीं एक दूसरे की, तो क्या हो रहा है? You are not doing active listening. और communication का 50% is active listening. Listening अगर आपकी अच्छी है, you can communicate well. Otherwise, the story will keep on rotating like anything. ठीक है, कहानी घूमती रहेगी. So meanwhile, Mr. Khalid joins in. एक story सुनाता हूँ. How many of you have heard about Times of India and Hindustan Times? Sir, actually Khalid sir joined. Okay.
Go ahead. No problem. It was a valid question. It was a valid question. Oh, Yes. I think communication skills बेहतर करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता है. That you read newspapers, right? Apart from self improvement, जब आप newspapers पढ़ते हैं, and my favorite as a child used to be the Hindu, क्योंकि वो जो vocabulary वो use करते हैं, जो words वो use करते हैं, वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया और बट हाँ अगर न्यूज़ पढ़ने की बात होगी तो आई प्रेफर टाइम्स ऑफ इंडिया. लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाँ हाउ कैन यू गेट बेटर एट इंग्लिश, देन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस द हिंदू है. आप खुद से खरीद के ये पेपर्स और आप शायद डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट टू बी एबल टू डिफरेंशिएट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पहले खुद बेहतर हो जाएं कम्युनिकेशन में. जब आप बेहतर होंगे तो आप बता पाएंगे कि हाँ मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं. सो या थैंक्स रजिया. इट्स इम्पोर्टेंट आप इंग्लिश में सोचे. देखो प्रॉब्लम यही होती है शुरू में कि हम सोचते हैं इंग्लिश में और हमारे जो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं वो भी हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, एंड दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लमेटिक है. आपकी कंस्ट्रक्शन जो वर्ड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो होता है वो अच्छा नहीं हो पाएगा. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश में, इट इज इम्पोर्टेंट यू पुट इट डाउन ऑन द पेपर, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होगा. यू विल नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि जो मैंने सोचा इंग्लिश में वो कितना सही है. सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू पुट इट डाउन ऑन पेपर. आप जब एक दफा उसको पेपर पर डालेंगे, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन सही थी गलत थी, आपके वर्ड्स के ऑर्डर सही थे गलत थे, आपका चॉइस ऑफ वर्ड सही था गलत था, राइट. एंड फिर आती है बात की ग्रामेटिकल एरर्स क्या हैं उसके अंदर, कहाँ पर आपको टू का इस्तेमाल करना था और कहाँ पे आपको ऑफ का इस्तेमाल करना था. ठीक है, वो सारी चीजें वो तभी होगा जब आप अपने थॉट्स को पेपर पे लेके आएंगे. जब तक नहीं करेंगे, आई मीन ये कोई गुरु मंत्र नहीं है, बट हाँ फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप अपने थॉट्स को पेपर पे लेके आए. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. All right. So, how to improve? Listen more than talk. Try to understand what the other person wants to say. Only after then, आप उसको respond करें. हम शुरू से बात कर रहे हैं, right? कि जब तक आप सामने वाले को मौका नहीं देंगे अपना मैसेज क्लैरिफाई करने का और आप बोलते रहेंगे, तब तक सामने वाला अपनी बात नहीं समझा पाएगा और आप सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे. And that's a deadlock, and you don't want that, especially when you are in the corporate world. You never want a miscommunication because it can lead to blunders, it can lead to something that you would not want in your career. So it's always important that you be patient when communicating with people. आप patience रखिए, सुनिए, फिर अपनी बात बताइए, and same way जब वो आपको कुछ कह रहे हो तो आप सुनिए. It is important. नहीं तो कम्युनिकेशन का गैप जहां पर भी आता है वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्म है एस्केलेशन. सो यू विल ऑलवेज फेस एस्केलेशंस. कंट्रोल योर इमोशन. ऑलराइट. सो जनरली जब हम अपने खास लोगों के बीच होते हैं, दोस्तों के, फैमिली के, तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड दैट वी कंट्रोल आवर इमोशंस, राइट. सो इफ यू आर हैप्पी, people will know you are happy. If you're sad, people will know you are sad. And if you're angry about something, somehow or some way, your family, your friends would know that you're angry. But when it comes to workplace, जब बात आती है, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप किसी MNC में काम करते हैं, right? It is very important you keep your emotions in check. So at that point of time, your emotions. Very good. Reels भी चल रही हैं किसी के. So it is very important that you are controlling your emotions when you're speaking with people, because अगर आप अपने emotions control नहीं करेंगे, आप rash हो सकते हैं. The way you talk to the other person, आप शायद एक बार को बदतमीजी भी कर सकते हैं अगर आपका emotion control में नहीं है, या आप over commit कर सकते हैं अगर आपका emotion control में नहीं है. So for example, the client asks you to deliver the project by next week, but you had a meeting with the developers
और डेवलपर ने बोला जी इस हफ्ते हम कंप्लीट कर देंगे, क्लाइंट ने आपको अगले हफ्ते की डेडलाइन दी है, डेवलपर ने आपको बोला हम इसी हफ्ते कंप्लीट कर देंगे, you are ecstatic, आप खुश हैं, you go to the client, you barge in there and you say why next week, I will be delivering it to you this week. But जब डेवलपर ने आपको इस वीक की बोला, उसने शायद कुछ कंस्ट्रेंट्स कंसिडर नहीं किए, कोई बग टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, कोई मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, दैट कैन एक्चुअली डिले द ओवरऑल डिलीवरी। और क्योंकि उसने आपको ये नहीं बताया दैट देयर वाज अ मैसेज हिडन इन देयर, आपने पूरी बात सुनी नहीं और आपने जाके क्लाइंट को ओवर कमिट किया कि हम इस हफ्ते डिलीवर करेंगे, एंड दिस ओवर कमिटमेंट कैन कॉस्ट यू, बिकॉज हुआ ये कि डेवलपर को दोबारा से कोड राइट करना पड़ा एंड दे वर नॉट एबल टू डिलीवर इट दिस वीक. So what happens in such scenarios? You are overcommitting and you are actually putting a bad name to your company, right? And to yourself as well. Because जो एक चीज वेस्टर्नर्स के साथ बहुत पर्टिकुलर है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथ, एंड इवन आई मीन दिस शुड बी ग्लोबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ऐसा करना चाहिए. इवन वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर ट्रांजैक्शंस, इन आवर कम्युनिकेशंस, and we should be very open. अगर आपकी डेडलाइन नहीं मीट हो रही है, you should be open, you should not lie about it. आप उसको गोल गोल घुमाइए मत. It's very important. कम्युनिकेशन, सारा खेल कम्युनिकेशन का है. कई बार लोग गोल गोल घुमा करके टाइम बाय करते हैं, but trust me, it works one time or maybe the second time, but the third time onwards even your clients would understand that you are not trustworthy. बिकॉज जब आप बोलते हो, जो आप कमिट करते हो, आप डिलीवर नहीं करते हो. सो लाइक आई सेड, जब आप खुश हैं तो आप ओवर कमिट मत कीजिए. सेम वे अगर आप नाराज हैं किसी चीज से, टेक सम टाइम आउट, टेक अ ब्रेक, बट डोंट कम्युनिकेट व्हेन यू आर इन अ फिट ऑफ रेज और यू आर एंग्री और यू आर सैड अबाउट समथिंग. इट इज बेटर नॉट टू कम्युनिकेट. इफ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस एंड कम्युनिकेट, perfect, very well. But if you cannot control your emotions and you still have to communicate, don't communicate, because then you will your communication will lead to something that you do not want to. Now, coming to point number 3 that can improve, think before speaking. So it is important that someone was saying something to you, you did not like it, all right, that's a possibility, right? Someone will say to me, aapka presentation acha nahi hai, all right. I do not have to take it as an insult. It could be a constructive criticism कि मेरा presentation क्यों अच्छा नहीं है. Maybe I can go back to the person and ask them कि what are the things that I can improve in this presentation, right? So that is called constructive criticism. So कई बारी people are criticizing you constructively. They try to get the better out of you. आपसे बेहतर expect करते हैं, आपसे बेहतर चाहते हैं वो, तो वो आपके काम को criticize कर सकते हैं. तो never take things personal. Think before you speak. Whatever you are speaking should not turn out to be an altercation, कि वो बहस में बदल जाए वो discussion, जबकि सामने वाला आपकी बेहतरी के लिए कुछ बोल रहा था. और ये I guess सबके साथ होता होगा. Families में कई बार your parents try to tell you what is right for you, what is wrong for you, and because उस time पे you are not thinking about the bigger picture and the experience that they are saying it from, आप अपने घर में शायद लोगों से बहस कर लेते हैं, या there is an altercation happens, right? Am I wrong? And at times we hurt our relatives, our friends, our parents, because we did not think about what the other person was trying to say. So it is important you think before you speak. Now, verbal communication skills help a lot to convey your feelings, right? जब हम बात करते हैं verbally, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ and I'm open about things, और मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, तो शायद मेरा मैसेज बहुत क्लियर आप तक जा रहा होगा. कुछ चीजें जो यहाँ स्लाइड में लिखी हैं आपके नहीं भी समझ आ रही होंगी, तो बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग देम वो चीज आपको समझ आ रही होगी. अब अगर मैं सिर्फ ये प्रेजेंटेशन आपके पास मेल कर दूं सबको, है ना, एंड टुमारो आई एक्सपेक्ट यू टू बी डिलीवरिंग दिस प्रेजेंटेशन टू मी, विल यू बी एबल टू डू दैट? No, because you have only read the presentation. You might not be aware कि ये presentation बनाते वक्त मेरे दिमाग में कितनी चीजें थी और किन चीजों को मैंने summarize करके ये bullets लिखे हैं, right? So you will not be able to deliver the same session because वो एक सिर्फ visual communication हुई आपकी इस presentation के साथ,
और क्योंकि someone did not explain to you what all has gone in preparing this presentation, you will not be able to deliver the same session, right? Practice your communication skills by speaking in groups. Like I said, बहुत unfortunate है, I'm not sure if you people face it, but अगर आप अपने दोस्तों के friends के अपने classmates के बीच, if you try to speak English, at times people make fun of you. People believe that you're trying to be over smart, and that actually brings you down. I'm not sure कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है. If anyone has faced this, anyone? Please don't be shy. अगर आप देखो आप shy हो, आपकी communication skills कभी अच्छी नहीं हो सकती हैं. So it's always required and important कि आप open हो. जब आपसे question पूछा जाए, आप interactive हो. And like I said in the beginning, ये session I want this to be interactive, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं तो बोल के चला जाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी शायद जो आपके समझ नहीं आएंगी. तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप, क्योंकि आपने कोशिश की है इंग्लिश में बात करने की, तो your friends or your family have tried to pull you down? Yes, it happens. Yes, everyone. I think with me also, sir. Okay, so पहली चीज यार इस तरह घबराना नहीं है, okay? Because that is something maybe they do not understand the importance of. They are not able to comprehend कि क्यों जरूरी है earlier stage में सीखना, and they will understand the importance. I know people who understand the importance now, maybe after 10 years of experience, why it is important to get better at your communication skills. I have a lot of people I know that in office, in my friend circles, who now think that it is important, and they are actually now trying to put it to their kids कि उनका बच्चा वो चीज वो गलती नहीं करे, because they learned it the hard way. They were very casual about it initially, and then when they went to the real world and they got to know that why communication is important, now they understand the importance of it, right? And they're trying to make right, but it's too late for them, right? They still can improve, but because of this they have faced a lot of losses in their career. तो आपने घबराना नहीं है. अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, don't get bothered because of it. And अगर आप कंटिन्यू करेंगे, so you will see the difference in people, that they would start following you rather than making fun of you. So it is important, आपका जो गोल है, like I said मेरी प्रेजेंटेशन में शुरू में था, you have to be a go getter. आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए, and then you should know how are you going to achieve it and what are the obstructions in the way. You cannot worry about that. अगर आप अपने obstructions के बारे में वही करने बैठेंगे, आप अपने डिलीवरी तक नहीं पहुंचेंगे. You will not be able to get to your goal. Now try to understand other people's emotions. This is the most important and difficult thing. So sorry, someone wants to say something? Okay, perfect. Try to understand other people's emotion. This is the most important and difficult thing. सामने वाला क्या फील कर रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है. सामने वाला क्या फील कर रहा है, ये जो है फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप सामने वाले की फीलिंग्स नहीं समझ सकते हो, तो फिर भाई मुश्किल है कम्युनिकेट करना at times, because there will be chances your client is frustrated. For example, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड है because एक बंदे ने एक प्रोग्राम स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बैंकिंग सर्विसेज क्लाइंट की 15 मिनट के लिए इम्पैक्टेड रही, और वो 15 मिनट कॉस्टेड देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन इज कॉल्ड empathy. All right, empathy. It's very important to have empathy in you. There are two things, empathy and sympathy. When it comes to communication, both are required. Empathy वो है जब आप अपने आप को दूसरों के शूज में डाल करके, दूसरों की सिचुएशन में डाल करके उनकी तरह सोचते हैं. So for example, कोई बच्चा किसी के पेपर में मार्क्स कम आए, right, and he is sad about it. Then empathy will be when Larab goes to that person and talks him out of sadness, क्योंकि he knows कि अगर मुझे इतने कम मार्क्स आए होते तो मेरी सिचुएशन क्या होती, मेंटल स्टेटस क्या होता मेरा. So that is empathy. But if someone has lost something,
right? And you sympathize with them, right? जब आप उनको सांत्वना देते हैं, that is sympathy. But empathy is where you put yourself in the other person's shoes and understand what they're going through, and which it is very important down the line. अगर आप empathy आपके अंदर नहीं है, you will not be a very good resource for any organization. Okay, down the line you might become managers, you will become delivery leads, you would have say 50 people, or you might have 500 people under you, and if you cannot empathize with their situation, then you're not a good leader, right? और अपनी empathy communicate करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. All right, you can send a written note to your colleagues, your friends. आप एक अच्छा मैसेज भेज सकते हैं अपने दोस्तों को. आप फोन कर सकते हैं, and you can tell them, you can feel their pain, you understand what you're going through, and that way you can calm that person down. So it's very important to understand people's emotion, right? जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी के इमोशन को आप समझ सकें. कई बारी लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, and that is the most different, that's the most difficult part. जब सामने वाला एक्सप्रेसिव ना हो, आपको यही नहीं पता चले कि वो गुस्सा है या नाराज है, right? या वो अभी खुश है. Now try to be concise and precise in your thoughts, words, presentations or writing. So मैं शुरू से कह रहा हूँ आपसे कि आपको बहुत concise और precise होना पड़ेगा अपनी communication में. आप बहुत lengthy letters नहीं लिख सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लंबे messages नहीं लिख सकते हो, because वो लंबा मेल जो आपने कस्टमर को लिखा है वो शायद 2 लाइनों में कंप्लीट हो सकता था, but because you tried to introduce a lot of new things into that, आपने वो एक पेज का मेल बना दिया. The people who get longer texts are more less to read it. For example, आपके पास दिन भर में WhatsApp पे बहुत सारे forwards आते होंगे, right? और उसमें से जो forwards बहुत lengthy होते हैं, I am sure most of us ignore those texts. कितने लोग हैं? इंटरव्यू कैसी प्रिपरेशन करें वो ही सब. Okay, perfect. So I could see Munib has raised his hand. Yes, this is a better exercise. People can raise their hands if they think. Gulzar, I can see Samreen, Razia. So Suhail, thank you. So you understand, right? ये एक हमारी human psychology है कि जो चीज बहुत ज्यादा लंबी है कहीं ना कहीं, और खास करके आज की दुनिया में, we tend to ignore that, right? तो अगर आप अब इसको communication skills के लिहाज से सोच के देखें, why it is important to be precise and concise and crisp in whatever you are trying to convey. क्योंकि अगर आपने लंबा चौड़ा टेक्स्ट किसी को भेजा है, please don't expect people to read it. ठीक है? अगर आपने वही एक लाइन में बहुत precisely कोई चीज किसी को लिख के भेजी है, you can expect a response much quicker, and some person सामने वाला समझेगा भी उसको. So I hope people will take note of all this, and that's how you can improve your communication skills. Let's move on to the next. Now, communication and presentation skills are a part of each other, right? तो एक तो हो गया कि जी मुझे अच्छा बोलना आता है, मुझे अच्छा लिखना आता है, ठीक है? But can I present it as well? So अभी right now I am actually demonstrating both communication and presentation skills. ठीक है? आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं आपको communication skills और presentation skills का एक अच्छा combination दिखा रहा हूँ सामने. How you need to present your thoughts, ठीक है? जो slides मैंने तैयार की हैं, these are part of my presentation skills. And उन bullets को जो मैंने summary बनाई है bullets की, उन bullet points को मैं आपके सामने कैसे explain कर रहा हूँ, that is part of my presentation skills. And when you go to the real world, corporate world, presentation skills will be your savior. वो आपकी जान बचाएंगी, क्योंकि कहीं भी आप किसी भी पोजीशन पे जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि आप अपना परफॉर्मेंस हम प्रेजेंट करके दिखाइए, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. हो सकता है यू माइट बी इन अ जॉब वे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस विद योर क्लाइंट्स, आपको प्रोजेक्ट प्लान्स दिखाने हैं, आपको ग्रोथ दिखानी है, प्रोग्रेस दिखानी है. तो ये प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ पीपीटी बनाने से नहीं आएगी, वो एक्सप्लेन करना भी उतना ही इफेक्टिवली आपको आना चाहिए. So
Presentation skills help you to communicate more effectively and professionally with your audience. ठीक है, अब like I told you कि मुझे मेरी audience पता है, तो मैंने अपनी presentation accordingly develop की है, और इसलिए वो शायद आपके लिए relatable है. बट यही presentation अगर मैं working professionals को दूं, 12 साल 13 साल experience लोगों को दूं, तो वो कहेंगे कि ये हमारे लिए कहीं से भी relatable नहीं है, because these things are not relevant to us. We already know this 12 or 13 years ago. So it is important to know your audience and then develop your presentation accordingly. Now, coming to the route to be job ready, मुझे काफी लोगों ने बताया they are undergrads right now, ठीक है. तो guys, एक चीज हमने सबने I think agree किया कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. It's not going to be enough. So what else? What else that after your 3-year program or maybe 4-year program, जैसा अभी CUET अगर आ जाता है, let's see how it goes. So your 3-year program, your 4-year program, maybe you're doing BTech, maybe you're doing MBB. I mean, let's leave MBBS from here. But if you're doing your BTech, if you're doing a 3-year undergrad program or a 4-year undergrad program, what is it that will make you stand out of the crowd and make you job ready? तो सबसे जरूरी चीज है कि आप गफलत में ना रहें, ठीक है. आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है. तो अगर आपको एक अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल गया है, फॉर एग्जांपल इन जामिया मिलिया इस्लामिया और मे बी इनटू एनी अदर यूनिवर्सिटी, ये गारंटी नहीं करेगा कि 3 साल के बाद आपके पास जॉब होगी, ठीक है, या ये गारंटी नहीं करेगा कि 3 साल के बाद आपके पास एक अच्छी जॉब होगी. So you need to start preparing on your own first. तो आपने क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए कि X ने फिजिक्स ऑनर्स लिया है तो Y ने भी फिजिक्स ऑनर्स ले लिया. Y के अपने निश हो सकते हैं. Y might be good into arts, Y might be good into music, Y might be good into chemistry, right? तो Y should not be following X blindly, ठीक है. तो ये काफी होता है यार दोस्तों में ना कि लोग एक के पीछे एक काफी सारे इकट्ठे एक ही कोर्स के अंदर एडमिशन कर लेते हैं, एंड देन दे स्ट्रगल बिकॉज दे आर नॉट गुड एट इट एंड दे नो, बट स्टिल क्योंकि भाई दोस्त के साथ रहना था, दे प्लान्ड एंड दे टुक एडमिशन. सो डोंट डू दैट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर करियर अर्ली इन योर ग्रेजुएशन डेज. Now try to identify a niche along with your degree and start learning the technology of the trade. ये आपको सेकेंड ईयर से कहीं ना कहीं अपने स्टार्ट करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, उसको ये समझना पड़ेगा कि am I going to go into cloud, am I going to go into DevOps down the line, am I going to go into technology, am I going to go into engineering, am I going to go into development, वो उसको पता होना चाहिए. There has to be, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 ट्रेड सोच रखे कि तीनों में से किसी में जाऊंगा. Because if you do that, you are actually doing injustice to yourself. You will stay confused. Sorry guys, someone is unmuted. People who are not speaking, can you go on mute? Abu Suhail, please mute yourself. Why can't you remove him? I'm not able to see who's unmuted right now, to be honest. I'm not the host actually, so I cannot kick. Okay, noise is gone. So now next thing is important is that sorry, I think so ये एक classic example है how disturbances in a meeting or a presentation can actually ruin the presentation. It is important आप जब ऐसे किसी भी
कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप सामने वाले को सुन रहे हैं, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग पीपल। ओके, perfect. So it is important that you identify a niche. Is it visible? No, sir. No, Is it it is. not? Okay. So when I say niche basically एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और उसमें आप फॉर एग्जांपल किसी के लिए वेब डिजाइनिंग कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, कि मुझे वेब डिजाइन करना है। आज की डेट में कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाना चाहते हैं, बिकॉज बहुत तेजी से फैलता हुआ वो एक प्रोफाइल है। Some people might be interested into going into cloud, क्योंकि धीरे धीरे हर कंपनी is preferring to move their business to cloud. Physical infrastructure की जगह पे वो क्लाउड पे रेंट कर रहे हैं चीजें, राइट। तो जैसे आपका डेटा है, लोगों के पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, आईफोन्स हैं, आप अपना डेटा देखो, वो अपने क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। अगर आप उनसे परचेज करते हैं तो वो आपने क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड कुछ नहीं है, एक वर्चुअल इंस्टेंस है जो कि उन्होंने रेंट किया हुआ है सप्लायर से। वो सप्लायर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, अमेजॉन हो सकता है, राइट। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑन दैट, बट हाँ, मतलब हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इट कुड बी म्यूजिक फॉर यू, राइट, इट कुड बी डांसिंग फॉर यू। तो वो निश आपको पता होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको पता नहीं है देन यू नीड टू क्रिएट अ निश, क्योंकि सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में अभी, और आपको वो रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ेगी कि मार्केट में वो कौन सी जॉब रेडी टेक्नोलॉजीज या ट्रेड्स हैं जो सीखने पे मुझे बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। अपनी फर्स्ट ईयर से ही कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में 10th 12th तक अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लीव असाइड लोग क्या बोलते हैं, लीव असाइड कि लोग आपको जज करते हैं कि ही इज ट्राइंग टू बी एन अंग्रेज, इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोल रही है। प्लीज प्लीज जस्ट डोंट लिसन टू पीपल, क्योंकि दैट इज व्हाट दे डू। व्हेन समवन ट्राइज टू गेट बेटर, सोसाइटी ट्राइज टू पुल देम डाउन। दैट इज अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बट यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल हु विल इनकरेज यू, ठीक है। तो आप दूसरे क्या बोलते हैं, लीव देम बिहाइंड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टार्ट लर्निंग टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो ये एक टूल है जिसने मुझे हेल्प किया है मेरे करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी क्लाइंट के साथ जब कोई मीटिंग होती है तो मैं जाकर के उसके सामने ब्लैबर नहीं करता हूँ सिर्फ जबानी तौर पे। I go to him with a presentation which is very concise and precise with the information that the client needs. अब अगर client wants me to explain something, he can ask me, what is this? Why are we showing this number? And I can explain it to them. ठीक है? So this is one skill that will be very helpful. आपको बहुत सारा डेटा क्रंचिंग आज की डेट में अगेन एक बड़ा अच्छा पोजीशन और एक बड़ा अच्छा रोल मार्केट में है, दैट्स कॉल्ड डेटा एनालिस्ट, राइट। तो जो इतना नंबर क्रंचिंग होती है, ठीक है, जो डेटा रिव्यू होता है, वो डेटा रिव्यू करने के लिए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द बिगेस्ट टूल दैट पीपल यूज इज एक्सेल। अब उसके अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी आप फर्दर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कई लोग उसमें मैक्रो सीखते हैं, कई लोग C++ सीखते हैं, कई लोग विजुअल बेसिक सीखते हैं टू मेक देयर डेटा मच मोर विजुअली बेटर एंड ऑल। तो ये बेसिक चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको अपना रेज्यूमे जो आप अपने भेजोगे रिक्रूटर को, वो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये वो चीजें हैं जो आपको बेसिकली आनी चाहिए। आपको सीखना स्टार्ट करना होगा अर्ली इन योर करियर, ताकि जॉब के लिए जब आप जाएं तो एटलीस्ट अगर आपका रिक्रूटर आपसे पूछे आर यू अवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, यू शुड बी एबल टू से यस। अब हमने पहले बात करी इनिशियल स्टेज में कि हम आइडेंटिफाई करें वेयर कैन आई एक्सेल। Now, later during your graduation years, maybe second year or third year, it is important you start learning that particular niche. उसके लिए कोई कोचिंग हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, ऑलराइट, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करना पड़ेगा। So you can start learning about cloud, you can start learning about networks, you can start learning about database. आप अपनी अपनी फील्ड में हर किसी के पास अलग अलग कोर्सेज हैं जो शायद उनको बेहतर जॉब रेडी बनाते हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करके
पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, डू दे नीड टू डू अ डिप्लोमा अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज कोर्स, या फिर वो सिर्फ लैंग्वेज डिग्री विल बी एनफ कि उनको इसके बाद वो लैंग्वेज। ये सर राइट राइट। सो अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल, थैंक यू सर। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट पाथ टू योर करियर, होता है कई बार, इट इज पॉसिबल, देन आपके पास आज की डेट में चीजें मुहैया हैं। एम्पावर अर्ज, आरिश सर वगैरह इसको बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड सोशल इनिशिएटिव जो हेल्प करेगा लोगों को टू गेट टू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम and where they can excel and what field they can go for, what field they need to choose. तो आप यूज कीजिए इन प्लेटफॉर्म्स को और ट्राई टू बिल्ड द निश दैट यू वांट टू गो इनटू, और उसको सीखना शुरू कीजिए। अगर आप सीख के जब आप अपने रेज्यूमे पे ये लिख के जाते हैं कि जी मुझे एक्स आता है, मुझे वाई आता है, मुझे जी आता है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दैट इम्प्रेसेस द रिक्रूटर कि हाँ आई एम नॉट हायरिंग समवन हु इज जस्ट अ प्लेन फ्रेशर जिसके पास सिर्फ एक डिग्री है। They know that they are hiring someone who knows one or two technologies, one or two trades, इसको एक ऑफिस टूल्स के बारे में पता है, एंड इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, एंड देन दिस इज हाउ यू बिकम अ पैकेज, बेहतर प्रेजेंटेबल पैकेज, ठीक है। एंड इन कंपैरिजन टू समवन हु हैज गॉन जस्ट विद अ डिग्री, you will stand out. Now, important factor, कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करे, राइट? हर कंपनी चाहती है जब वो आपको, सिंपल सी बात है यार, इट्स अ बार्टर, राइट? कंपनी हायर्स यू, दे पे यू एंड दे एक्सपेक्ट सर्विस इन रिटर्न, राइट? कि आप उनके लिए कुछ काम करोगे। तो उनके लिए ये जानना जरूरी होता है कि भाई वो आपको हायर करेंगे तो ऐसी क्या सर्विस मिलेगी जो ये बंदा डिजर्व करता है फॉर दिस पे, ऑलराइट? सो they will be requesting or requiring a skill that you have, right? And the company needs it, ठीक है। जैसे मैंने भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल्स दिए, ठीक है। उन सर्टिफिकेशंस का, उन कोर्सेज का आज की डेट में टेक्नोलॉजी कंपनी में बहुत जोर है, बहुत डिमांड है। तो जब कंपनी को ये पता चलता है कि बंदा एक्स टेक्नोलॉजी सीखा हुआ है, तो कंपनी नोज कि मैं इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराऊंगा इसकी, एंड ही विल बी रेडी टू टेक द नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब बनिस्बत उस बंदे के जो सिर्फ डिग्री लेके जा रहा है, क्योंकि जो सिर्फ डिग्री लेके जा रहा है उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी लॉन्गर। Now, hiring managers often look for someone with good soft skills. तो हमने बात करी कि आपके पास कोई एक अच्छा निश स्किल होना चाहिए, हमने बात की आपके अच्छे कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। आप सॉफ्ट स्किल ना, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश लिखना आता है। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, आप लाइक एम्पैथाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी बेहतर है, आप लॉजिकली कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है तो वो इस बात से सिर्फ इम्प्रेस नहीं होता कि इसने JMI की डिग्री ले रखी है, राइट? वो ये जानना चाहते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल कितने केपेबल हैं टू टेक अप दिस जॉब। तो दे विल ट्राई टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड, और दे विल पुट यू इनटू सिचुएशंस जहां पर दे विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, कि आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहां पर वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या नहीं, या अपने आप को सिचुएशन से बाहर लाने के लिए क्या बेहतर सोच सकते हैं। Now, skills, qualifications, experience should be in line with the position you're applying for. अब कोई फॉर एग्जांपल एक बंदा जो मैकेनिकल का बीटेक का बंदा है और वो जा करके एक फॉर एग्जांपल मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, वो जा करके एक म्यूजिक टीचर के लिए अपनी एप्लीकेशन डाले, does not make sense, right? Because that guy is a mechanical engineer and he knows nothing about the music industry. तो उस बंदे को कैसे, वो बंदा कैसे म्यूजिक पढ़ा सकता है? सेम वे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या इस जॉब डिस्क्रिप्शन में, इस रिक्वायरमेंट में उन पॉइंट्स को मांगा गया है कि नहीं। और जब आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं तो क्या चीजें हैं जो आपके लिए एज नेगेटिव काम करती हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज और योर प्रेजेंटेशंस। इंपॉर्टेंट,
जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो यू नीड टू फर्स्ट थिंक. इट इज नॉट बैड कि बंदे ने सवाल पूछा और मुझे छूटते ही जवाब देना है. नो, दैट्स नॉट हाउ दे वांट इट. यू कैन टेक a few seconds to think what should be your answer, make it constructive. लेकिन अगर आपका train of thought यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, आप ये बात भी कर रहे हो और वो बात भी कर रहे हो, then the recruiter knows, the company knows that आप confused हैं. आप confused नहीं होंगे हो सकता है, but because you were trying to make the interview so better that you jumped a lot of trains, and because of that the recruiter can think that you are not fit for the job. Now आप जब नौकरी ढूंढ रहे हैं, देखो यार, बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है, एक बड़ा विशियस साइकिल है, राइट? नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए नौकरी चाहिए, ठीक है? ये एक विशियस साइकिल है. विशियस साइकिल वो चीज होती है जिसका कोई एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी है वो, ठीक है? तो आपको अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो यू नीड टू गेट अ जॉब, ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में टू गेट अ जॉब यू नीड एक्सपीरियंस, ठीक है? तो बहुत विशियस साइकिल है. बट अगर आप ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी हैं, इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ पैकेज ऑफ योरसेल्फ, आप बेहतर मार्केटेबल हो मार्केट में, यू विल बी अ बेटर फिट फॉर अ जॉब इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स विथ यू रादर देन जस्ट योर डिग्री. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आप जॉब सर्च के लिए जाएं, तो प्लीज इंश्योर आपका ध्यान सिर्फ पैसे के पीछे ना हो या कंपनी क्या फैसिलिटीज देती है इसके पीछे ना हो. इट शुड बी टू लर्न. आप क्या सीख सकते हैं इस रोल से, और वो जो आप सीखेंगे वो आगे करियर में आपको कैसे काम देगा. जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं होगा, आप जॉब में सेलेक्ट नहीं होंगे. तो आपका लर्निंग ज़ील रिक्रूटर को दिखता है जब सामने वाले बंदे को इंटरव्यू करते हैं. दे नो इफ समवन इज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स और इफ समवन इज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द कंपनी. तो उनको वो बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द कंपनी है. उनको वो बंदे चाहिए जो रेडी टू लर्न है, जिनके ऊपर कंपनी पैसा और एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑन योर डेवलपमेंट. वो आपको ट्रेन करती हैं, वो आपको बेहतर ट्रेनिंग्स देती हैं, वो सेशंस करवाती हैं आपके, एंड दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्गर रन. तो वो बाय डिफॉल्ट होगा जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे. बट डोंट गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन जस्ट फॉर मनी. Go to an organization because you see the opportunity to learn new things. So with that, coming to the summary, like I said, we have been talking about it all through this session. सिर्फ डिग्री होना is not enough. आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसके अलावा जो मार्केट में टेक्नोलॉजी है या ट्रेड है या कोई वोकेशनल कोर्स है, उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन, कोई एटलीस्ट आपने कोई क्लास अटेंड कर रखी हो जिसमें आपने सीखा हो उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास ये सारी चीज़ों का होना, तब जाकर के आपकी एम्प्लॉयमेंट जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हांस होती है, बढ़ती है, बेहतर होती है. If you do not have all this as a package, unfortunately, you must know a lot of people around you who are struggling to get a job. And after this session, I think you will know why a lot of people are struggling to get a job. Thank you very much. And we are open for questions. Yeah, you can ask question and mute yourself if anyone has question. Sir, can you give us some suggestions how we can find our niche? Because currently we are facing mainly this problem, like we just little bit we know something like little bit about web development, little bit know about the data science, but and it's seems like it's fascinating also, but we don't know that we will be suitable for this or not. Like how we can figure it out. Sorry, so Adiba, I think your voice was not very clear, but जो मुझे समझ आया, आपको ये समझने में कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए कि आप अपना निश कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? Yes. ओके, सो जैसे मैंने आपसे बोला, राइट, कि देखो यार, थोड़ी ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कई बारी कि एज स्टूडेंट्स पेरेंट्स मेरी फीस पे कर रहे हैं एंड आई एम वेरी लेड बैक अबाउट इट कि यार ठीक है ना, पैसा तो जा ही रहा है एंड डिग्री मिल जाएगी जामिया की या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की, फिर तो नौकरी तो रखी हुई है वहां पे बाहर मेरे लिए. तो ये गफलत है जिसमें लोग जी रहे हैं. दैट इज व्हाई आई सेड कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. यू नीड टू स्टार्ट अर्ली
एंड आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स लाइक आई सेड कि जैसे आरिश सर का ये MPowerUrge है, यहाँ पे यू हैव करियर काउंसलिंग अवेलेबल, राइट? अब अर्ली स्टेजेस में यू कैन टॉक टू काउंसलर्स, दे कैन टेल यू आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट? ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन अदीबा अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू आंसर एवरीवन कि आप किस निश में जा सकते हो, और ना ही वो मेरा राइट होना चाहिए कि मैं किसी को बोल दूं कि नहीं भाई तुम तो डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं भाई तुम तो चले जाओ क्लाउड के अंदर, तुम नेटवर्क से, नो, दैट इज नॉट समथिंग आई शुड डिसाइड। वो मैं आपको इनपुट्स दिया मैंने बस अभी। नाउ यू नीड टू रिसर्च कि वो जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स में एक्चुअली आपको करना क्या होगा, ठीक है? क्योंकि जो मैंने बातें बोली, जो मैंने टेक्नोलॉजीज के नाम किए, वो बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं, उनके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। तो यू नीड टू गो बैक, रिसर्च एंड अंडरस्टैंड कि उस निश के अंदर क्या क्या चीजें फर्दर बाइफरकेट हो रही हैं, और उनमें से क्या चीजें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो टू मेक योरसेल्फ जॉब रेडी। एंड अगर इसके बाद भी रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हेल्प ले सकते हो आरिश सर की इस पोर्टल की, एंड गेट योरसेल्फ अ काउंसलर असाइंड, एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई और टू सपोर्ट यू इन आइडेंटिफाइंग योर निश। बट रिसर्च थोड़ी खुद करनी पड़ेगी, बिना अपनी रिसर्च के अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा किसी की, बिकॉज हो सकता है अदीबा आप किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं उसको राइट अवे जज नहीं कर सकता हूँ, बट यू नो कि मैं किसी फील्ड में अच्छी हूँ, तो उस फील्ड के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, वो रिसर्च थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। बिफोर दैट नो वन कैन टेल यू योर निश। Anyone else for any question? Correct answer. I think correct answer of this question is that ask yourself after 5 year, 10 year, where you are, what you are doing. There will be help in that sections to choose, identify your use. Please. Right. May I speak, Khalid sir? Please, sir. If someone cannot research about him or herself, but if he or she start talking to someone, he or she might can understand his niche. Yes, at times, see, so I feel his talking is very important. He or she should start talking. Completely agree. So कई बारी आपके अंदर वो आर्ट, वो नीश पहले से है मौजूद, बट शायद दूसरों को दिखता है, बट आपको नहीं पता है उसके बारे में, एंड व्हेन यू टॉक टू पीपल यू गेट आइडियाज, ठीक है? एंड कई बारी आपके अंदर कोई निश नहीं भी है, देन यू गेट आइडियाज बाय टॉकिंग टू पीपल कि मार्केट में इस टाइम पे वो ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर आदमी के अंदर अपना कोई निश हो। एट टाइम्स यू नीड टू क्रिएट अ निश। वो मेरे प्रेजेंटेशन में ही मैंने लिखा है कि यू माइट हैव टू क्रिएट अ निश, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपके पास एक निश होगा। Anyone for any more questions? May I, sir? Please. सर क्या ऐसा हम अपने रिज्यूमे में हम मेंशन करना हमारे लिए यूजफुल होगा कि हमने ड्यूरिंग अवर एजुकेशन हमने छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या अगर कुछ छोटा काम किया है तो उसको मेंशन करना अच्छा रहेगा, या फिर मतलब इंटरव्यू के टाइम हम उसको मेंशन करें इफ वी आस्क्ड? नहीं, if you are doing those internships, ठीक है, इनलाइन आपके डिग्री के इनलाइन है वो, ठीक है, आपने डिग्री को हैम्पर किए बगैर वो इंटर्नशिप्स किए हैं अगर, तो देयर इज नो हार्म इन लेटिंग द वर्ल्ड नो दैट यू हैव डन इंटर्नशिप्स, बट डोंट पुट इट एज योर जॉब कि मैंने जॉब की है कहीं पर। These when you are working with someone during your undergrad years, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड इंटर्नशिप क्या होती है? जहां पर आपको शायद पैसा ना मिले या बहुत थोड़ा मिले, लेकिन आपको चीजें सिखाई जाए, लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड हो चीजें। हाँ एग्जैक्टली, जहां आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा देंगी, बट द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम देम आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो एक्चुअली। सो कैन वी कंसीडर इट लाइक 2 year experience, 1 year experience? कैन वी मेंशन? नो, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, जो लोग फॉर एग्जांपल कई जामिया के अंदर जो लोग हैं उनको पता होगा, जामिया में एक इवनिंग का BE का कोर्स है, तो जो लोग डिप्लोमा से लैटरल एंट्री लेते हैं कई बारी वो BE में एडमिशन लेते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर मार्केट में, दुनिया में, इंडिया में ही,
जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीई स्टूडेंट्स को जॉब दे देती हैं बेसिस देयर डिप्लोमा, ठीक है। और उनके लिए फिर भी इवन आफ्टर डिग्री, जो उन्होंने डिग्री के दौरान भी काम किया है, वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। बट ऐसे कोर्सेज कम हैं बॉस। आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो ड्यूरिंग योर डिग्री ईयर्स, इंटर्नशिप अगेन नॉट जॉब, ठीक है, जहां पर आपके पास एक ऑफर लेटर, जॉब वो होती है जहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफर लेटर देती है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आपको एक पे स्केल ऑफर करती है और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देती है डाउन द लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपने जॉब के बारे में जिक्र किया कि मैंने डिग्री के दौरान ही जॉब करी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बहुत बेहतर होंगे। आपके चांसेस बिगड़ने के भी हो सकते हैं कि आप, हाँ, कई लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं एंड दैट इज फाइन। पार्ट टाइम इज ओके, हाँ, पार्ट टाइम इज ओके एंड यू कैन मार्क इट एज इंटर्नशिप इन योर रेज्यूमे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर मुझे फेलोशिप के बारे में पूछना था। उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे टीच फॉर इंडिया की, तो क्या वो काउंट होता है एक्सपीरियंस में या नहीं? टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे फील्ड का क्वेश्चन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आरिश सर कैन आंसर दैट इफ ही वांट्स। फेलोशिप का एक्सपीरियंस इनका काउंट होगा या नहीं? हाँ, तो मतलब देखिए इन जनरल आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या फेलोशिप्स कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस विल टेक इट वेरी वेल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अप्रिशिएट करती हैं इन चीजों को, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल टेक इट वेरी वेल। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट लाइक इट कि आपने डिग्री के दौरान ही आपने शुरू कर दिया था ये सब, एंड इफ यू हैव डन योर डिग्री करेक्टली और नॉट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं आपको, कुछ नहीं करेंगी, ठीक है। बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स ड्यूरिंग योर डिग्री ईयर्स, ठीक है। आप कुछ जो भी सीख रहे हो ड्यूरिंग योर डिग्री ईयर्स, ट्रस्ट मी, one way or the other it will come back and will be helpful in your future. Okay sir. I have one question. It's kind of basic. So like I am doing some course related to Arabic language, and whatever job I'm applying, it's not related to this Arabic language. So should I mention it in my resume or not, even if I'm really good at it? Maybe if you can repeat your question. Sorry, I missed you somewhere in the middle. Sir, I just wanted to ask, like I'm applying for any job, and they don't want the job is not related to Arabic language. Okay. But I have done courses which are about Arabic language. So should I mention there or not? Even if you should. Why not? See, when a recruiter hires you, okay, so they also want to know. यार ये देखो, this is again language. You're talking about a language. आप एक language, additional language जानते हो, right? So क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बंदे को बोला था, स्टेज पे बोला था कि someone who cannot speak your native language, never laugh on them because they know another language. तो अगर कोई बंदा एक additional language जानता है तो he has an upper hand. तो जैसे मैं भी अगर अपने रिक्रूटर को कभी भी बताता हूँ तो I always tell them I can read Arabic. I cannot speak Arabic. I cannot be a very well writer, a very good writer, but I can at least read Arabic. So I mentioned that. तो आप ये mention करें कि आप Arabic का आपने कोर्स करा है या आप Arabic की डिग्री ले रहे हैं. It's very important in your languages known. आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के साथ Arabic की अपनी फ्लुएंसी भी लिखें कि can you just read or you can write and you can also speak Arabic. तो रिक्रूटर आपसे ये जरूर जानना चाहेगा हमेशा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, एंड ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस हो सकता है कभी भी डाउन द लाइन. Sir, what if I don't have any certificate and I am self learner and I know the language? यार, irrespective, that is see, इंग्लिश सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेट लेता है क्या? हिंदी उर्दू सीखने के लिए आपने कोई सर्टिफिकेट ली है क्या? इफ यू कैन प्रूव दैट यू कैन रीड, यू कैन राइट, यू कैन स्पीक, दैट इज एनफ. उसके लिए कभी कोई आपसे डिग्री नहीं मांगेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा. All right, sir. Thank you so much.
I have a Excuse question, me, sir. sir. I have a question. Sure. Can I ask? Sure, please go ahead. Sir, can you throw some light on the scope and importance of online jobs? See, that's, to be honest, a very vast world. Okay, online jobs के बहुत सारे वो हैं आपके sections हैं, right? तो I'm not sure what section are you talking about. ठीक है, वो online jobs में कई जगहों पे लोग as a chat assistant काम करते हैं, as a chatbot या फिर chat representative की तरह काम करते हैं कई organizations के लिए. ठीक है, that is one example. कई लोग वेब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं बैठ करके, है ना. कई लोग और किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेट पे. तो आपका सेक्शन क्या है इंटरनेट जॉब में, है ना, वो सेक्शन मार्केट में कितना रेलेवेंट है. ठीक है, अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो इंटरनेट पे बैठ के, तो आई डोंट थिंक कि एक्सेप्ट मेकिंग यू लर्न दी ऑफिस टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स, वो डेटा एंट्री का जॉब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाला है या आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट बनाने वाला है मार्केट के अंदर. आप अगर एक फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्निकल कंपनी के लिए आप चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हो ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, है ना, तो वहां पर यू आर रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज. ठीक है, एंड आपको इंटरैक्ट करने को मिल रहा है लोगों से. तो वहां पर आप 2-3 चीजें सीखते हो. एक, थोड़ा आपकी टेक्निकल स्किल्स ब्रश होती हैं. दूसरा, आपको आपकी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रश अप होती हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलता है लोगों से बात करने का. तो the question that you have asked, again, it's an open-ended question. ठीक है, कि इसमें ना बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं हम बैठ करके एंड पूरा दिन निकल सकता है. बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप जो भी निश, जो भी जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके लिए है कि आप पहले उसके बारे में कुछ रिसर्च करें, लोगों से बात करें, टेक पीपल्स इनपुट्स, कि ये चीज कितनी रेलिवेंट है आज और क्या ये रेलेवेंट रहेगी आने वाले 5 सालों में. बिकॉज एक चीज इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में कि आपको, भाई, अगर आपने डिग्री ले ली, कोई सर्टिफिकेशन कर ली और नौकरी मिल गई, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके भर रहे हो जॉब इंटरनेट पे या आप सोच रहे हो करने का, प्लीज हैव अ रीड अबाउट इट कि वो रेलेवेंट है. अगर रेलेवेंट है तो कहाँ तक रेलेवेंट है और कब तक रेलेवेंट है. Okay, thank you, sir. Any other question? Yes, sir, I have a question. I have a question. हाँ जी सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे. हेलो. जी बताएं. सर मेरा नाम आसिम मोहम्मद है. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 ईयर्स से यानी जॉब कर रहा हूँ सर. ठीक है. और मेरे को जो में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिटी गेम डेवलपमेंट में, लेकिन मेरा सर वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. ओके. क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उनका एक लिमिटेशन हो गया है कि आपको इतने ही एरिया में काम करना है, क्योंकि बाहर जो अपॉर्चुनिटी है वो स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे हो नहीं पा रही. तो क्या किया जाए सर? तो आप कंपनी पे तो कभी भी देखो डिपेंडेंट रह नहीं सकते ना. आपने जामिया में एडमिशन, फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने जामिया में एडमिशन लिया है, तो जामिया में वो अपनी डिग्री कोर्सेज के लिए जामिया आप पे मेहनत करेगी, बट जामिया जॉब दिलाने की गारंटी नहीं देती आपको. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप चले जाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको, कि हर 2 साल 3 साल में आपको खुद को अपडेट करने की जरूरत है. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको अपग्रेड करने में हेल्प करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है. मैं जिन ऑर्गेनाइजेशन से मैंने काम किया है, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑन मी. उन्होंने मेरे अपलिफ्टिंग पे स्किल्स के ऊपर, इवन क्लाइंट विजिट्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए कंपनीज ने बहुत पैसा खर्चा किया है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय के ऊपर वो पैसा खर्च करे. तो आपको कंपनी के भरोसे नहीं बैठना है ना. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बाहर क्या अवेलेबल है. ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपके पास, तो अब 10 साल के एक्सपीरियंस के बंदे के लिए तो कोई एक्सपीरियंस का तो कोई मुद्दा है नहीं. अब ये है कि आपकी जो स्किल है क्या वो आउटडेटेड हो गई है. ठीक है, अगर आउटडेटेड हो गई है तो उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं. अपडेट करना या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हैं क्या, जो पुरानी स्किल क्योंकि आउटडेट हो चुकी है. तो वो नई स्किल सीखना और फिर जॉब हंट करना
आस मोहम्मद साहब, वो आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी आपको हेल्प नहीं करेगी, और बल्कि ये भी है कि क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कंपनी के अंदर, और क्योंकि आपने भी अभी तक कोई मूव नहीं किया है, तो ये भी मान के चलिए कि हो सकता है कंपनी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाले सालों में भी ना दे। जी जी श्योर सर। एनीवन एल्स? यस सर। सर इंटरव्यू के दौरान सर एक क्वेश्चन सर पूछा जाता है कि आप सर क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सर उस टाइम पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, द बेस्ट आंसर टू दैट, दो चीजें होती हैं इसमें ना। एक कि आपने अपनी रिसर्च करी है ना, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूँ, गो थ्रू दोज वेबसाइट्स। एक वेबसाइट है ग्लास डोर, एक वेबसाइट है एम्बिशन बॉक्स। तो ये वो वेबसाइट्स हैं, या फिर आपके MPowerUrge आरिश साहब हैं, तो ये भी करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट्स में डील कर रहे हैं। तो और ये एक अच्छी सोशल सर्विस है। तो भाई इन जगहों पे जाइए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या फीडबैक्स अवेलेबल हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर में, और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उन पोजीशंस का एवरेज पैकेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल, कोई बंदा अप्लाई कर रहा है और उसको ये रिसर्च से मालूम पड़ा है कि मेरी एक्स पोजीशन के लिए कंपनी में 6 लाख रुपए का बैंड है, फॉर एग्जांपल, है ना, और आप करेंटली बैठे हो 3.5 लाख रुपए पे, फॉर एग्जांपल। तो आप दो चीजें बोल सकते हो एम्प्लॉयर को। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है एंड यू आर फिट फॉर दिस रोल, यू कैन लेट देम नो अ नंबर। और अगर आपको लगता है कि मैं अगर नंबर बोलूंगा तो HR हो सकता है मुझे अफोर्ड ना कर पाए, तो इट इज ऑलवेज गुड टू से आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सबसे सेफ ऑप्शन जॉब इंटरव्यूज में, जब आपसे सैलरी का सवाल पूछा जाए, सबसे सेफ ऑप्शन है आप बोलें एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आज की डेट में मार्केट में है 25 से 35% के बीच का हाइक बेसिस योर करंट रिम्यूनरेशन। और अगर आप फ्रेशर हैं तब तो उनके पास पहले से बैंड होता है, उसमें आप कोई निगोशिएशन नहीं कर सकते कि नहीं जी मुझे 6 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो इट इज ऑलवेज गुड टू से एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आंसर्स योर क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू सो मच। Sir, yes, please go ahead. Good evening, sir. Anyone for any more questions? Khalid Saab, give me an opportunity to speak. Sure, please. Sir, myself, I'm a Sorry, whosoever is speaking, you have a lot of echo. I think you're on speaker. If you can turn off the speaker and speak through your normal mic. बहुत ज्यादा एको है आपकी आवाज में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। audible? You are audible, but बहुत ज्यादा एको है। Please go ahead. Let me see if I can hear your question. Go ahead. So my question is, like I'm a bachelor of hotel management student, and I have also done some courses apart which are not directly connected to BH. So is it good to mention those courses in my CV? See, आपने जो भी एडिशनल स्किल्स सीखी हैं, like I said, आज नहीं कल, कभी ना कभी लाइफ में आपको वो हेल्प करेंगी। मे बी आपके मैथ्स का A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको कभी लाइफ में हेल्प ना करे, लेकिन जो भी स्किल्स आप एडिशनल स्किल्स सीख रहे हो, वो आपको आज या कल कभी ना कभी हेल्प करती हैं, एंड इट मेक्स योर रेज्यूमे लुक गुड दैट यू वर एबल टू पुट some extra time into learning a new skill.
तो जो भी चीज आप एडिशनल सीखते हैं वो अपने रिज्यूमे में शोकेस करना is never a bad thing until and unless it is something illegal. Basically, sir, I have a year gap in my bachelor courses. I'm a bachelor of computer application student from IGNOU, and right now I'm pursuing the BHM from Jamia. So, is it good to mention my computer application in my CV? It is important that if you are able to explain the 1 year gap, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं कि जी हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे जिनका गैप है, बट सारी नहीं है ऐसी. सो सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑन वन हैंड कैन नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में ऐसी हैं जब आप एक्सप्लेन करते हो कि भाई ये गैप क्यों है, दे अंडरस्टैंड एंड दे लेट यू थ्रू. Thank you. Any more question, anyone? Yes, people can hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, thank you. First of all, Khalid साहब, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ for such an informative session. And Roman Mani, Mohammed Suhail, thank you for organizing this. Why I am here in this session, I am calling you from UAE. I'm a HR professional or career and a communication coach. और खालिद साहब, मैं आपको हाईली अप्रिशिएट करती हूँ द वे यू हैव कंडक्टेड द सेशन. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कंडक्ट किया. सिंस मैं खुद एक ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करती हूँ और जिस वे से आपने ये कंडक्ट किया सेशन, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारे फ्रेशर्स बच्चों के लिए. ठीक है ना, जिस वे से आपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपने बताया कि हाउ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इज सो वाइटल. तो हम जब रिक्रूट करते हैं ये फ्रेशर्स को, हम ये ज़रूर देखते हैं कि ये कितने प्रिपेयर्ड हैं इंडस्ट्री के लिए. ठीक है. और मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की MBA स्टूडेंट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. एंड जामिया मिलिया में मैंने 2 साल पहले भी एक मोटिवेशनल सेशन किया उनके बच्चों के लिए. तो मैं सच में तारीफ करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन एंड कीप इट अप. थैंक यू सो मच नजरीन, बहुत शुक्रिया. So I think we have reached the end of this session. So heartfelt gratitude to everyone who joined in. Thank you everyone for joining. Thank you everyone for Especially Abdul sir, putting thank up you with for this joining. session for this long. I really appreciate your efforts and I hope कि इस session के बाद you will find yourself at a better place and somehow and somewhere you will be able to start deciding about your career, your future. That's very important. Yeah. Don't forget to fill out the feedback form, everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Everyone, we'll be dropping off. Have a good one. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, when the certificates will be given? Yes, sir, I'm to the here. Thank you participants? so much. Please, everyone, join tomorrow's session as well. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone, for joining in.